सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉल्ड एज ग्लास, है ना। सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, इसको ग्लास बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जमना, बताओ फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? बोलो भाई, सेटिंग ऑफ सीमेंट फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? सोच के बोलो, फिजिकल चेंज या फिजिकल चेंज? बिल्कुल भी फिजिकल चेंज है आपका, ठीक है ना। क्या सीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्लियर है? ये सीमेंट केमिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर? डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना। अब सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? रेत का, सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो, सिलिका, रेत, रेत का फॉर्मूला क्या होगा? अरे सीमेंट का बता दिया, रेत का बता दे रहे हैं, आयरन का तो बता ही दिया, पूरा घर बन गया। बताओ रेत का फॉर्मूला SiO2 क्या होगा? SiO2। क्लियर नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है हमारा सेटिंग ऑफ सीमेंट का फिजिकल चेंज। क्या है हमारा सेटिंग ऑफ सीमेंट फिजिकल चेंज, केमिकल फॉर्मूला चेंज आपका नहीं आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, कंबशन ऑफ वुड, कंबशन ऑफ वुड फिजिकल या केमिकल? केमिकल चेंज। क्लियर है ना? तो केमिकल चेंज होगा आपका, ठीक। कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस सॉरी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो आपका O2 का CO2 में कन्वर्जन हो रहा है, केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज है? बोलो, अरे केमिकल चेंज है ना, केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है ना, पहले क्या था O2, बाद में क्या हो गया CO। ठीक है, समझ में आया क्या केमिकल चेंज फिजिकल चेंज? अच्छा ब्रेकिंग ऑफ वायर, ब्रेकिंग ऑफ डायमंड या कटिंग ऑफ डायमंड, कटिंग ऑफ डायमंड हमारा क्या है? फिजिकल चेंज। क्लियर नहीं क्लियर है? चलो, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट क्या है? फिजिकल चेंज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज है क्या पक्का? ठीक है, केमिकल चेंज बोलो। फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज नहीं, ठीक है ना। उसमें भी कार्बन होते हैं, इसमें भी कार्बन होते, कंपोजिशन को मिलकर नहीं आता। चलो तो डालो हेडिंग आप फिजिकल चेंज, हेडिंग लिखिए सभी लोग, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। क्या होगा भाई फिजिकल चेंज? जरा को the change occur in any substance, in any substance where 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 chemical composition, where chemical composition does not change, does not change while state, while physical state change, while physical state change called as, called as physical change, called as physical change। क्लियर होने के हुआ, ठीक है। वो चेंज इसमें क्या हो, केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, फिजिकल स्टेट चेंज, हम लोग क्या बोले फिजिकल चेंज बोले। क्लियर है ना? एग्जांपल बोलो फिजिकल चेंज के, एग्जांपल बोलो फिजिकल चेंज का, बताओ लास्ट बताओ एक एग्जांपल था फिजिकल चेंज का। मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक। एक और एग्जांपल बताओ। बताओ लास्ट, बेटा बताओ तुम सबसे लास्ट में ना, हाँ।
मेल्टिंग ऑफ आयरन, ठीक, बैठ जाओ। यानी मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, ये भी चलेगा, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, है ना। चलो और बताओ भाई, और एग्जांपल बोलो लास्ट में, बताओ। हाँ तुम कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे। कटिंग ऑफ डायमंड, है ना, बैठ जाओ। एग्जांपल कटिंग ऑफ डायमंड, ठीक है, कटिंग ऑफ डायमंड। चलो नेक्स्ट, और एग्जांपल, हाँ बताओ। क्या कह रहे हो आप? कैंपर का, हाँ करेक्ट एग्जांपल, सही आंसर, ठीक है ना। कैंप वेपराइजेशन ऑफ कैंपर, ठीक है ना, या फिर सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ कैंपर। सब्लिमेशन मालूम है ना क्या होता है? व्हाट इज सब्लिमेशन? मेल्टिंग ऑफ, मेल्टिंग लिख दिया, मेल्टिंग ऑफ मेटल लिख लो भाई, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। और कोई बताएगा फिजिकल चेंज? मतलब सब कुछ मेल्ट मत करो भाई, मैं मेल्ट हो जाऊंगा। कोई एग्जांपल बताओ मुझे जिसमें मेल्टिंग ना हो, थोड़ा कंडेंसेशन कर दो। वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सही क्या, सही है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। कोई गरम करा को ठंडा कर रहा है, ठीक है, कुछ और तो बोलो भाई। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और सबके टारगेट वाटर है। कोई एक तड़कता भड़कता एग्जांपल बताओ। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, कुछ ब्रेक हुआ था, नहीं कटा था अभी। और भी बता ब्रेकिंग ग्लास के अलावा। कलर चेंज ऑफ, ना बच्चा, ना, पीएच पेपर का कलर चेंज एक केमिकल फिनोमिना है, हम बताएंगे तुम्हें क्या क्या, क्या चेंज होता है, ठीक है ना, चैप्टर है अपने पास, ठीक है। अभी बोला नहीं तो नहीं, हाँ, रील, रेल, बहुत बढ़िया तुमने बोला, मुझे बहुत बढ़िया बोला, हाँ फिर से बोलो जरा। बारिश गिरती है तो बारिश में तो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज। अरे फिजिकल तो क्या सोचा, फिजिकल ऐसा है क्या? पानी पानी रहता है बेटा। तुम ये बोलो कि सर ओले गिरते हैं तो उसको भी मान सकता है ना, हाँ। अब फिर वही बात, पानी और बर्फ, बर्फ कभी थोड़ा सा, उसने क्या गुनाह कर दिया वाटर इसी चक्कर में। हाँ बताओ, सॉलिडिफिकेशन ऑफ, हाँ करेक्ट, ठीक है। चलो ये हमारे फिजिकल चेंज हो गए आपके, है ना। हम लोग आए केमिकल चेंज पे, नाउ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है, डेफिनेशन तो निकालना था मुझे। देखो द टाइप ऑफ चेंज, सो ऐसे लिखना, एक मिनट रुको जरा। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? The change occur in substance where chemical composition, chemical composition change, where chemical composition change while while physical state
while physical state बस इसमें इतना ही रखो, फिजिकल स्टेट को हटाइए। where chemical composition change where chemical composition change called as chemical change, called as chemical change। क्योंकि केमिकल चेंज जब होता है तो फिजिकल स्टेट चेंज होती भी है, नहीं भी होती, दोनों बातें हुई। जैसे कि अगर मैंने आयरन का रस्टिंग हुआ तो रस्टिंग में क्या होगा कि आयरन पहले सॉलिड था और रस्ट भी क्या हमारी सॉलिड है कि नहीं। दूसरा, अगर मैंने कंबशन वुड किया तो वुड पहले क्या थी, सॉलिड, और कंबशन करने जो वुड है, वुड इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसका एग्जांपल है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कंबशन कर क्या बनता है, ऑन कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। मालूम है नहीं मालूम है। तो यहाँ सॉलिड से गैस बना और वहां सॉलिड से सॉलिड रहा, इसलिए मैंने अब फिजिकली इसको टच नहीं किया। The change occur in a substance where chemical composition change called as chemical change। क्लियर नहीं क्लियर है। केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा तो क्या होगा हमारा, केमिकल चेंज बोला जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल में आते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना, क्या क्या एग्जांपल होंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं कंबशन ऑफ वुड, ठीक है ना, कंबशन ऑफ वुड। ठीक, सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, अरे हाँ हो गया। ये इतना मतलब इतना पुराना हो गया कि मुझे लग रहा है उसको लिखना ही छोड़ दो। सबको मालूम चल गया, जनता जानती है पीएच चेंज। दूसरा एग्जांपल बोलो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, अरे बोलो भाई, डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ बिल्कुल, डाइजेशन ऑफ फूड एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड। और बोलो, लाइक फूड वाला एक हो गया भाई। अब कोई फास्ट फूड वाला बोल दो, बोलो न्यूक्लियर रिएक्शन। हाँ ये चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है भाई ये तो। न्यूक्लियर रिएक्शन, रिएक्शन जितनी होगी सब चेंज होंगी आपकी, है ना। कोई नॉर्मल बोलो ऐसा जो जो लगे ना मगर हो। हाँ एक मिनट, सॉरी यार, बिल्कुल एकदम करेक्ट है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ऐसे लिख देते हैं ना, मिल्क टर्निंग टू कर्ड, टर्निंग टू कर्ड, बिल्कुल करेक्ट है। और भी बताओ। हाँ एसिड करेक्ट, एकदम एकदम करेक्ट, एसिड एसिड रहेगा ना, एकदम करेक्ट है। और कोई, न्यूट्रलाइजेशन, हाँ रिएक्शन जो भी होंगी तो केमिकल चेंज है, रिएक्शन को छोड़ करके न्यूट्रलाइजेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, है ना, ये छोड़ो। और कोई नॉर्मल सा बताओ मुझे। हाँ करेक्ट, ये भी एक रिएक्शन है ना। चलो चार से काम चलाओ, ठीक है ना। कंबशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, मिल्क टर्निंग टू कर्ड, एसिड रेन, ठीक है ना। फोटो, दूसरी बात तुम बोल रहे हो, दोबारा आ गया, लिख देते चलो, फोटो सिंथेसिस, करेक्ट है। चलो भाई नोट करो इसको पूरा। तो ये चेंजेस के बारे में मुझे थोड़ा पढ़ाना था, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। जो मैंने कल थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था, सबका कॉपी हो गया ना ये। ठीक, हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन
ऑफ मैटर, इसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर कैन बी क्लासिफाइड, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू बेसिस, दो बेस पे मैटर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक तो रहता है इसका, एक तो रहेगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्या रहेगा, एक रहेगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, वो आपका क्या होता है, उसको देखते हैं। तो मैटर को आप सॉलिड, लिक्विड, गैस और इसके बाद प्लाज्मा, क्या चीज है भाई, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंस, और लास्ट फर्मियोनिक कंडेंस, है ना। ठीक, ये आपकी इनकी स्टेट आ गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंस और फर्मियोनिक कंडेंस। क्लियर। ये जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस है, दीज आर द फंडामेंटल स्टेट्स, है ना। ये क्या है हमारी, ये मैटर की फंडामेंटल स्टेट्स है। ठीक है, तो लिख देना, ये जो हमारी स्टेट है, these three are fundamental state of matter, ये तीन होगी, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आप लोग जूनियर क्लासों में काफी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है ना, और साइज फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा, ना इसका शेप फिक्स होगा, पता ही नहीं, पता है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में पता है किसी को, प्लाज्मा के बारे में, व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट, एनीवन कैन एक्सप्लेन, बोलो, पता है। अरे कोरोना, तो बोस आइंस्टीन कंडेंस या आइंस्टीन के अंदर होगा। और लास्ट वाले न्यूटन। हाँ बोलिए, क्या सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, इसे कोलाइड बोलते हैं बच्चा, इसे कोलाइड बोलेंगे। उसे हम लोग वो स्टेट में होगी, ठीक है ना। वो एक मिक्सचर होता है, जो तुमने बनाया ना, सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, वो एक मिक्सचर होता है, जैसे कि शैम्पू, शेविंग क्रीम, जेली, है ना। जेली कैसी होती है, सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड होती नहीं होती है। शैम्पू कैसा होता है, ना लगे सॉलिड ना लगे लिक्विड, शहद, हनी, ना लगे सॉलिड ना जैम, अंदर भरा हुआ है, ऐसे करके निकाल सकते हो, बट डब्बा उल्टा कर नहीं गिरेगा। ये सेमी सॉलिड्स, ये हमारे कोलाइड्स हैं। दीज आर मिक्सचर, नॉट, ये स्टेट नहीं कोई, ठीक है ना। प्लाज्मा में मैं बताता हूँ क्या होता है। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट होती है, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस तुम जानते हो उसके बारे में ना, और ये तुम लोग का होमवर्क भी है कि आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस इनकी प्रॉपर्टीज लिख के लानी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस इनकी प्रॉपर्टीज लिख के आपको लानी है, आप ये लिख के लाओगे, ठीक है ना। और जो आप नहीं कर पाओगे वो हम कल कराएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं पूछूं आपसे कि सॉलिड की शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, आप बोलोगे फिक्स होता है। वॉल्यूम कैसा होता है, आप बोलोगे फिक्स होता है। मैं पूछूंगा क्यों होता है, आप कुछ नहीं बोलो, क्योंकि आपको नहीं पता है। पता है क्या, किसको मालूम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और उसकी रेंज जो होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब प्लाज्मा जरा देख लेते हैं। तो बच्चा सुनो भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है,
मैटर को तीन फॉर्म में क्लासिफाई किया गया, सब्सटेंस को तीन फॉर्म में क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी है क्लास 6 से 10 तक वो लिख के लाना है आपको, ठीक है ना। जितनी आपको आ जाए 2 3 5 10 जो भी आ जाए वो प्रॉपर्टी आपको लिख के लानी। प्लाज्मा और बोथ कंडेंस, परमियोनिक कंडेंस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, प्लाज्मा भी नहीं है, मगर बता देता हूँ आपको। जब आप पीजी करोगे ना केमिस्ट्री में, अगर करोगे तो तब आप ये पढ़ोगे, ठीक है ना, वैसे करोगे नहीं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है जरा देखना, प्लाज्मा क्या होता है, ये आपका हैवी लुमिनस बॉडीज मिलता है, हैवी लुमिनस बॉडीज, दैट मींस सन, स्टार्स, यहां पर ये आपको मिलेगा। सन और स्टार्स में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस होती है, सन एंड स्टार्स कंटेन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ H2। सन और स्टार्स में इतनी ज्यादा हीट है कि H2 कैन नॉट सर्वाइव, इट बिकम्स ब्रेक टू H सिंगल बॉन्ड H, ये H सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, H और H, यहां तक कि H और H ये भी सर्वाइव नहीं कर पाते, ये H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन में ये डिसोसिएट, that form is called as plasma state, the state of matter in which any metal में होगी आपकी H को हम लोग मेटल ही बोलते हैं, H वैसे नॉन मेटल भी है लेकिन ये मेटेलिक कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है ना। तो the form of substance in which metal in their ionic form, metal in their cationic form exist with their constituent electron is called as plasma, ठीक है ना। The form of matter in which metal in the form of their cation exist with its constituent electron is called as plasma। बात समझ आई नहीं आई, हैवी लुमिनस बॉडीज में हमारा मिलेगा, सोलर स्टार्स में मिलता है। और कहां पर, जब मेटल को हाई टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं तभी स्टेट ऑब्जर्व होती है। अभी क्लियर नहीं, क्लियर है, सिलेबस में नहीं, बस थोड़ा बहुत समझ जाओ आप क्या है ये। प्लाज्मा क्या है, हैवी लुमिनस बॉडी से मिलेगा, जैसे सन और स्टार्स, ठीक है ना, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस होती है और वो आपकी हाई टेम्परेचर सर्वाइव नहीं कर पाती है, वो अपने आयंस और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाती है ना। तो मेटल इज कैटायनिक फॉर्म विथ देयर कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट, ठीक है ना। चाहो तो लिख सकते हो, एक आप लिख लो जरा, प्लाज्मा के बारे में लिख लो, ठीक है ना, प्लाज्मा के बारे में लिख लीजिए। द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इन विच द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इन विच द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इन विच मेटल, ये मेटालिक फॉर्म में हो गया आपके ना, मेटल exist in their ionic form, metal exist in their cationic form, metal in which metal exist in their cationic form, in which metal exist in their cationic form with their constituent electron, with their constituent electron, with their constituent electron called as plasma state, ठीक है ना, called as plasma state, called as plasma state। मैं फिर से रिपीट करूं क्या, करता हूं, ठीक है। The form of substance in which metal exists in their cationic form, the form of substance in which metal exists in their cationic form with their constituent electron called as plasma state, called as plasma state, clear है, called as plasma state, ठीक है। आप इसमें आप लिख लीजिए, this state exists in heavy luminous bodies like sun, stars, ठीक है। In sun, plasma state is H plus plus electron,
एक क्वेश्चन लिखो आप लोग जरा, एक क्वेश्चन लिखे आप सभी लोग, राइट डाउन, बोलो। क्ले, क्ले कोलाइड है, जो क्ले है ना वो हमारा कोलाइड है। क्ले का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ होता है भाई, क्ले का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 डॉट SiO2 डॉट 2H2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है क्ले का। ठीक है, तो वो हमारा कोई स्टेट है, वो कोलाइड है हमारा, ठीक है ना। चैप्टर एक है आपके सिलेबस में, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड कोलाइड, तो वहां पर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। जो जितना स्टेट के बारे में जितना कंफ्यूजन है, मुझे पता है क्लास 6, 7, 8 में आपको सॉलिड लिक्विड बेस पढ़ाया गया, लेकिन तुम्हारा दिमाग वैसा कहाँ रहा होगा? शैम्पू में, है ना। ये सारा शैम्पू क्या है? सॉलिड तो ठीक समझ में आ रहा है, लिक्विड समझ में आ रहा है, शैम्पू क्या है? अब टूथपेस्ट देखा तो टूथपेस्ट क्या है ना। तो कोलाइड है वो सब आपकी, है ना, जिसमें एक स्टेट आपकी नहीं होती है, वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वो चीजें पढ़ाना सही नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे अपने ना, एक क्वेश्चन को जरा, राइट डाउन, राइट डाउन डिफरेंस, राइट डाउन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट डाउन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट डाउन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ, difference in properties of solid, liquid and gas. Write down difference in properties of solid, liquid and gas. Write down difference in properties of solid, liquid and gas. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, घर से करके लाना, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज जितनी है आपको आ जाए, 2, 4, 5, 6, 7 जो प्रॉपर्टीज आए, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, क्लियर। और कैसे लिखना? क्लासीफाई करके, यस, आप बीच में इस तरह पेज सेपरेट करना, ठीक है ना। और इधर लिखना सॉलिड, फिर लिक्विड, है ना, फिर गैस। ये प्रॉपर्टी सारी आपको लिख के लानी, जितनी लिख पाओ। तो ये मुझे पता है, चीज आपने पढ़ी हुई है ना। तो थोड़ा सा अपना जो छुपा हुआ टैलेंट है वो मुझे दिखाइए, और कल लिख के लाइए कम से कम 5, 6, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोग लिखेंगे इसके बारे में। हम लोग पढ़े केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। चलो, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकली किस तरह क्लासिफाई करते हैं इसको देखते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन आपका है, सबसे पहला हमारा एलिमेंट, सेकंड इज कंपाउंड, एंड थर्ड इज मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये क्या हुआ, ये हमारा पूरा ये केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे पहला आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले एलिमेंट, किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट बेसिकली क्या है हमारा? एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, that cannot further, that cannot further divide in more simpler one by any physical or chemical method। एलिमेंट सब्सटेंस की वो फॉर्म है जिसे
किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अप्लाई करके कोई भी मेथड लगा करके और सिंपल फॉर्म में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। कल मैंने बोला एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक कैटेगरी है, क्या है, जस्ट लाइक मेल फीमेल, ये एलिमेंट हमारा क्या कैटेगरी है आपकी, और उसके अंदर एटम आते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, आयन, आयन आयन है, और ये मेल भी है, क्या आयन मेल नहीं है, बोलो भाई, अरे बोलो ना, है ना, इतना इतना तुमने सोचा क्यों अपने बारे में, तो तुरंत बोलना चाहिए, है ना, ठीक है। तो मतलब ऐसा, क्या सारे मेल आयन है, क्या सारे मेल आयन है, ऐसा नहीं है ना, मेरी बात समझ लेना भाई, है ना, बहुत अच्छे से एकदम, मतलब कॉम्प्लिकेशन आ रहा है आगे, ठीक है। मैंने बोला क्या है एलिमेंट, क्या है एलिमेंट इज जस्ट लाइक मेल, आप समझ लो, ठीक है ना। और अगर कोई पर्टिकुलर नाम मैंने लिया, तुम्हारा नाम लेते इस बार, क्या क्या नाम है तुम्हारा, है मुस्तफा नाम है, ठीक है। तो भाई मुस्तफा, मुस्तफा, एक मुस्तफा, ठीक है ना। तो मुस्तफा मेल है, क्या है, क्या सारे मेल मुस्तफा है, नहीं है ना। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज कॉपर, एग्जाम्पल है ना। लेकिन सारे एलिमेंट हमारा क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट कॉपर हो सकता है, लेकिन कॉपर एलिमेंट आपका, यहाँ पर कॉपर को आप एलिमेंट बोल सकते हो, लेकिन सिल्वर को भी आप क्या बोलो, एलिमेंट बोलो, गोल्ड को भी एलिमेंट बोलो। ये सारे एलिमेंट कितने होते हैं, एलिमेंट हमारे 1 मिनट, कितने एलिमेंट हमारे 1 मिनट, याद रखना, ठीक है ना। देखो एलिमेंट पहले समझो क्या है, एलिमेंट क्या है हमारा, एलिमेंट इज अ form of substance which cannot divide in more, which cannot convert in more simpler form by any physical or chemical method, clear है। ये एकदम लास्ट यूनिट है हमारी, इससे ज्यादा ब्रेक करोगे ना, तो ब्रेक करने पर फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर सब पार्टिकल आएंगे, आएंगे सब पार्टिकल्स आए, सब पार्टिकल पता नहीं पता आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पता है ना। एटम के अंदर क्या था, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का सब पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे क्वाड पार्टिकल, इससे क्वाड पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उतना लंबा आप लोग नहीं जाओ, बस बता देंगे वो क्वाड पार्टिकल कौन कौन से हैं, ओलंपियाड में से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अभी हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट समझ में आया कि नहीं आया, क्या है एलिमेंट बताओ, एलिमेंट क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या चीज, the simplest form of the simplest form of substance that can not that cannot change to more simple form by any physical or chemical change, by any physical or chemical by any physical or chemical change, by any physical or chemical change, clear। ये एलिमेंट है, ठीक है ना। हाँ एलिमेंट जो है हमारे कितने नोन है, देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन, 118 एलिमेंट नोन है ना। इसमें कितने नेचुरल है, कितने सिंथेटिक है, बोलो भाई, 118 एलिमेंट कितने नेचुरल है, कितने सिंथेटिक है, पता नहीं, पता है, बोलो, 87, ये तो तुमने गैस किया, 92 एलिमेंट्स, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल, while others are synthetic, while others are synthetic, ठीक है।
सुनिए ध्यान से, अब बात कर रहे हो, ध्यान सुनो एक बार, ठीक है ना, तुमसे बढ़िया बोलता हूँ मैं। ये जो ए एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन क्या होता है? एटॉमिक नंबर वन बोलो, हाइड्रोजन। टू एटॉमिक नंबर 92, ये क्या होगा हमारा? यूरेनियम। एटॉमिक नंबर वन से एटॉमिक नंबर 92, ये जो यहां तक जो एलिमेंट होते हैं, आर आर नेचुरल, आर नेचुरल, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग टेक्नीशियम एंड प्रोमीथियम, टेक्नीशियम एंड प्रोमीथियम, इनको आपको बहुत सारी तो हो गए 90, बाकी दो कौन से? एटॉमिक नंबर वन से लेकर 92 तक, 92 तो एलिमेंट हुए, इसमें मैंने दो क्या कर दिए? दो सिंथेटिक कर दिए, इनको हटा दिए। इसके अलावा क्या होगा आपका? जो नेप्टूनियम है, एनपी एंड प्यूडीसियम, प्यूमीशियम, ठीक है ना, तो ये हमारा है नेप्टूनियम 93 एंड प्यूमीशियम हमारा रहेगा 94। आर आर फाउंड, आर फाउंड नेचुरली, आर नेचुरली अकर, आर नेचुरली अकर इन वेरी स्मॉल परसेंटेज, वेरी स्मॉल परसेंटेज। तो ये याद रखना, 118 एलिमेंट्स है, कितने? 118 एलिमेंट्स है, पूरे पूरे 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें 92 हमारे क्या है? 92 नेचुरल, बाकी सभी क्या है हमारे? सिंथेटिक। क्या है हमारे? सिंथेटिक एलिमेंट है। उस 1 से 92 तक भी तो हमारे होंगे टीसी और पीएम, ये क्या होंगे आपके? ये हम आपके नेचुरल नहीं होंगे, सिंथेटिक होंगे हमारे। प्यूमिथियम और नेप्टूनियम, ये दो एलिमेंट 93 94, ये हमारे क्या है? ये आपके नेचुरली है, अगर करते बट स्मॉल क्वांटिटी में। क्लियर है ना? है ना? ये टॉपिक है सभी ने क्या? तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में, इस टेबल में कुछ हमारे मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड है, ठीक है ना। ज्यादा क्या है इसमें, जरा देखो, ज्यादा क्या है बताओ? ज्यादा मेटल है ना, तो मेटल ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में, है ना। और नॉन मेटल हमारे क्या है? नॉन मेटल कम है। और सबसे कम क्या है हमारे? मेटलॉइड। क्या है? मेटलॉइड, ठीक है ना। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। देखो भाई, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, और ये टी आपका, और पोलोनियम, जितने भी एलिमेंट है हमारे, ये सब हमारे क्या है? ये सारे आपके मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड, ठीक है। बाकी यहाँ से लगाओ, यहाँ हाइड्रोजन से, ये पूरे आपको मेटल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मेटल। यहाँ भी आपको मेटल मिलेंगे, है ना। और ये आप यहाँ से स्टार्ट करो, एल्यूमिनियम, ग्रीन, ये वाले जो देख रहे हो आप, ये सब हमारे क्या है? मेटल्स। नॉन मेटल नहीं, सारे सारे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल है ना। टिन, एसएन मेटल है ना। तो जितने भी ये सब हमारे मेटल है, मेटलॉइड से पहले वाले सब हमारे क्या है? मेटल है। बाकी जितने हमारे क्या है? ये सब हमारे नॉन मेटल है। क्लियर है ना? ये हमारी क्या है? गैसेस, ये भी नॉन मेटल आपकी रहती है, ठीक है ना। पढ़ा है ना पीरियोडिक टेबल आपने पूरा क्लास 10 में? ठीक है, चलो। तो ये आपके एलिमेंट हुए ना। ज्यादा एक्सिस्टिंग एलिमेंट कौन से हैं आप तरह, इवन अपनी बॉडी में? ज्यादा एक्सिस्टिंग एलिमेंट पांच है ना। एक तो अपने को लिखा हुआ है बुकों में, एक लाइन लिखी हुई है, शायद तुमने कभी सुना भी हो। छिद जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। ये सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? थोड़ी काफी वो लाइन है, छिद जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। ये पहली बार बोली गई थी जब फिलोसफर थे। अभी क्या है? वाकई में पांच एलिमेंट्स हैं।
वाकई में 5 कौन कौन से हमारे? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। ये 5 एलिमेंट हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। हमारी बॉडी का 90% पार्ट कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है ना। तो आप इसमें लिखो जरा, एक पॉइंट बना के लिखो इसमें कि 90% पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, 90 एक पॉइंट बना के लिखो, 90% पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। 90% पार्ट ऑफ 90% पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी made up of carbon and hydrogen. 90% part of human body made up of carbon and hydrogen. कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक पॉइंट और कीजिए, 90% पार्ट ऑफ अर्थ, 90% पार्ट ऑफ अर्थ, 90% पार्ट ऑफ अर्थ मेड अप ऑफ 90% पार्ट ऑफ अर्थ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से होंगे आपके? ओल्ड, सी, आलू, टीका। ऐसे याद करना है आपको। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, है ना। इसके निमोनिक कोड्स याद कर लीजिए आप। ओल्ड, सी, आलू, टीका, है ना। ये वैसे याद रखिए, निमोनिक्स का याद करें, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास थे, पहला था आपका एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में बता, अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। हेडिंग लिखिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मैटर का क्लासिफिकेशन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर था। अभी एलिमेंट पढ़ा, एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डालो आप। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक। एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई किसमें करेंगे वो लोग? कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं? आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10th में। मेटल क्या होगा? मेटल। इसके अलावा नॉन मेटल, नॉन मेटल है ना। और क्या लास्ट वाला? मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये हमारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है। ठीक है। इनके बारे में लोग स्टडी करते हैं। अरे सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। जागते रहना सब लोग। चलो, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग मेटल, क्या लिखेंगे? मेटल लिखेंगे, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ लिखो, मेटल है फॉलोइंग, मेटल है फॉलोइंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल आपके वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज आप बताओगे, ठीक है ना। चलो बोलो, क्या है मेटल? क्या है मेटल? फिजिकली और केमिकली डिफाइन करिए। मुस्तफा, क्या है मेटल?
और तेज बोलो, थोड़ा तेज। मेटल इज सोलोरस, ठीक है, एक प्रॉपर्टी आ गई। मेटल इज सोलोरस इन नेचर, ठीक है। और बताओ ये प्रॉपर्टी एक एक करके भाई डीजे नाम बताना, एक एक करके बोलो। डक्टाइल, व्हाट इज डक्टिलिटी? एक करेक्ट। तो मेटल और डक्टाइल, और बताओ। हाई मेल्टिंग पॉइंट, और बताओ ये। लस्ट्रस, और बताओ। वैल्यूएबल इन नेचर, और प्रॉपर्टी की बताओ। कोई केमिकल बताओ, केमिकल प्रॉपर्टी। ये सब फिजिकल बताइए, केमिकल बताओ। अरे बोलो भाई, क्या प्रॉपर्टी है मेटल की? हाईली रिएक्टिव, ऐसा नहीं कर सकता। गोल्ड रिएक्शन करता है क्या? तो फिर कैसे कर रहा है मेटल आ रहा है? बोलो कुछ, बोलो। कोई ये केमिकल प्रॉपर्टी बताओ मेटल की। हाईली, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बताओ। इट रिएक्ट विद एसिड टू डिवाइड टू गिव, हाँ टू इवॉल्व, बोलोगे क्या हाथ से देता है? गिव, हाइड्रोजन करेक्ट है, और सब मोहम्मद। लूज इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और भी प्रॉपर्टी मेटल की। बस वही तो बोला है सब। कोई एक प्रॉपर्टी बताओ मेटल की, बोलो। अरे तो मैं बोल रहा यार, लूज इलेक्ट्रॉन छोटे का है, बताओ। ये कोई केमिकल प्रॉपर्टी बताओ। और एसिड से रिएक्शन कार्डियल रिलीज करता है, बेस से निकलता है रिएक्शन। हां, करेक्ट करेक्ट, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपने बेसिक ऑक्साइड बना दिए, मतलब ऑक्साइड बना क्या, तो बेसिक रिएक्शन की। और भी प्रॉपर्टी मेटल फॉर्म सॉल्ट ऑन रिएक्शन with ऑन रिएक्शन, करेक्ट है, करेक्ट। और भी प्रॉपर्टी हो गई ना, 8-10 प्रॉपर्टी तो हो गई मेरे हिसाब से ना। चलो लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो आप। मेटल्स आर सॉलिड, किससे नहीं बोला था? मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड। हमें मालूम है तुम बोलने वाले हो। अरे मैं मालूम था तुम बोलने वाले, मालूम था। मेटल्स आर सॉलिड, लिखो। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्शन मर्क्यूरी, ठीक है ना, Hg। एक्सेप्शन निकला था मरकरी, मर्क्यूरी क्लियर। Hg, मरकरी सिंबल बताया ना, Hg होता है, ठीक है। सिंबल सारे मालूम है। ये W किसका सिंबल होता है? बताओ सिंबल, W किसका सिंबल है? टंगस्टन, एकदम करेक्ट। आधो को पता ही नहीं था W। चलो, Sn किसका सिंबल है? टेन का, चलो पता है। मेटल्स आर सॉलिड, क्या लिखा आपने? मर्क्यूरी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट को, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन बोलो इसमें। सोडियम ना बच्चा, सोडियम नहीं होगा। गैलियम, सीजियम, है ना। देखो एक्सेप्शन, गैलियम Ga एंड सीजियम Cs। एक्सेप्शन लिखो, गैलियम यानी Ca एंड Cs, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेटल्स आर, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। ये स्पेलिंग आएगी ना, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। मीनिंग चेक करते रहना स्पेलिंग। मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, ठीक है ना। डक्टिलिटी क्या होती है? हाँ हाँ, एबिलिटी टू कन्वर्ट मेटल इनटू वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। क्लियर है ना सभी को? मालूम नहीं मालूम है? ठीक। ये डक्टिलिटी। मैलिएबल क्या होता है? शीट पे कन्वर्ट करना, ठीक है ना, उनको ठोक पीट के शीट पे कन्वर्ट करना, ठीक है ना। आपको पता है 1 ग्राम गोल्ड
सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? गोल्ड होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा डक्टाइल हमारा गोल्ड होता है। 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, पता है आपको? 1 ग्राम कितना? 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर 1000 मीटर लेंथ का वायर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए तो गोल्ड की ज्यादा डिमांड है। गोल्ड की ज्यादा डिमांड क्यों है बताओ? क्योंकि हम लोग वियर करते हैं इसलिए? नहीं, ये बहुत ज्यादा आपका यूज होता है टेक्नोलॉजी में, मोबाइल में, लैपटॉप्स में, आपके टैबलेट्स में, मतलब कोई भी सेमी कंडक्टर फॉर्मेशन में गोल्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। और आजकल तो सब कुछ सेमी कंडक्टर है ना, लगभग सब कुछ सेमी कंडक्टर से हो रहा है। वहां ज्यादा आपका एक गोल्ड लगता है, वहां ज्यादा सिल्वर लगती है। क्लियर नहीं? क्लियर है? इस वजह से ज्यादा एक्सपेंस है। ऐसा नहीं कि हम लोग, हम इंडियंस के अलावा कोई कौन पहनता है क्या बाहर? बहुत कम लोग है ना। डक्टाइल वेरिएबल, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बताया आपको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो आप। हाई मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी लिया। डक्टाइल सोनोरस इन नेचर, लिखो सोनोरस इन नेचर। सोनोरस इन नेचर, SONOROUS है ना, है ना? आवाज आते टन की है ना। सोनोरस इन नेचर, ठीक है। आगे लिखो हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें होती है? बोलो। सिल्वर, करेक्ट एकदम, है ना। लिखो सिल्वर। एग्जाम्पल सब। हाईएस्ट थर्मल, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख लो। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर, ठीक है ना। इसीलिए अचानक सिल्वर का भाव भाव क्यों बढ़ा? जरा इतना ज्यादा उस पे कॉस्टली हो गया, क्योंकि हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? पूरी दुनिया मूव कर रहे है ईवी में। और कंडक्टिविटी ईवी में बड़ा खेल है। कंडक्टिविटी अगर नहीं होगी ना, अगर अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो हम लोग गियर अभी लगाएंगे और गाड़ी 10 मिनट बाद आगे बढ़ेगी, है ना। कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए वहां पे, है ना। चलो आगे लिखो जरा। इसमें कुछ केमिकल लिख लेते हैं ना। केमिकली लिखो आप इसमें कि मेटल ऑन रिएक्शन विद एसिड और बेस, मेटल ऑन रिएक्शन विद एसिड और बेस, मेटल ऑन रिएक्शन विद एसिड और बेस रिलीज हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑन रिएक्शन विद एसिड और बेस रिलीज हाइड्रोजन गैस। यू नो अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? सुना है ना? ये बात याद रखना, इस जो मैंने लाइन लिखाई है कि जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, वही हाइड्रोजन गैस रिएक्शन, वही आपके एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। जो नीचे वो रिएक्शन नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है ना। मतलब गोल्ड को तुम एसिड के साथ मिक्स करने लगे, नहीं करेगा रिएक्शन, हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट लिख लो उसमें आप जरा। those metal which those metals which are present below hydrogen, those metals which are present below hydrogen, those metals which are below, those metals which are which sorry, those metals which present below hydrogen in electrochemical series, those metals which present below hydrogen in electrochemical series, below hydrogen in electrochemical series evolve hydrogen, evolve hydrogen on reaction with, evolve hydrogen on reaction with, evolve hydrogen on reaction with acid, on reaction with acid, on reaction with acid, हाँ? अच्छा बिलो लिखा है क्या हमने? हाँ ठीक, नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन,
नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन एसिड है ना, नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड, मतलब ऊपर है आपके वही करेंगे ना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तुमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमने छोटा फॉर्म देखा है, यहाँ पर अभी बड़ा फॉर्म देखोगे आप, ठीक है ना। ये तुमने पढ़ा होगा ना, तुमने ये पढ़ा होगा, पढ़िए ना, इसका निमोनिक्स भी पढ़े होंगे आपने, ठीक है, तुमने ये पढ़ा होगा, ठीक है। ये है आम जिंदगी, ठीक है, और ये है मेंटोस, ये पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़नी है, अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। तो नीचे वाले रिएक्शन करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे, ऊपर वाले करेंगे, ठीक है ना। चलो ये अब उल्टा थोड़ा दी गई, ठीक है ना, ये अपोजिट दी गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कितना पॉइंट हो गया आपका, पहला पॉइंट हो रहा है एसिड में। नेक्स्ट देखो जरा, एसिड ऑन रिएक्शन विद, सॉरी मेटल्स ऑन रिएक्शन विद, metal on reaction with oxygen, metal on reaction with oxygen forms, metal on reaction with oxygen, metal on reaction with oxygen forms basic, form basic or amphoteric oxides, form basic or amphoteric oxides, form basic or amphoteric oxides, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्लियर हुआ ना, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, एम्फोटेरिक बनाएंगे, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सोडियम, ये ऑक्सीजन से करेगा रिएक्शन, क्या प्रिपेयर करेगा, 2Na2, क्या प्रिपेयर करेगा, 2Na, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है, क्या, सोडियम ऑक्साइड। ये हमारा बेसिक है, क्या है हमारा, इट इज बेसिक। व्हाई इट इज बेसिक, हमने कह दिया, तुमने मान लिया बेसिक। ये बेसिक क्यों है, अगर कोई बेस है उसको वाटर मिक्स करो तो वाटर बेसिक हो जाना चाहिए, यानी कुल मिला के वो भी क्या हो जाए, बेस हो जाना चाहिए ना आपका। इसे जरा क्या करो, वाटर मिक्स करो, क्या बनेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, बनेगा ना एनएच, एनएच क्या बना, बेस, क्लियर नहीं, क्लियर है, ठीक। तो मेटल रिएक्शन ऑक्सीजन का क्या बनाएगा, अपना बेसिक ऑक्साइड, क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसको, एक रिएक्शन नोट कर लो, एम्फोटेरिक भी बनाते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखिए, मेटल ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मेटल ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अरे क्या हुआ अभी, क्या, देखो मेटल ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, metal on reaction with hydrogen forms, metal on reaction with hydrogen forms metallic hydride, metal on reaction with hydrogen forms metallic hydride, forms metallic hydride, क्लियर है। मेटालिक हाइड्राइड कौन से होंगे हमारे, जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिया, LiH लिथियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, CH2 कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है ना, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड, ये सारे हमारे मेटालिक हाइड्राइड है, क्लियर ना। आपको क्लास 10th का एक पर्सन याद होगा, सबको याद होगा, मेंडलीव,
बहुत परेशान किया था ना उसने। ये जो मेंडलीव था ना, मेंडलीव ने जो अपनी पहली पीरियोडिक टेबल दिया था वो इन ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पे दिया था ना। अरे हाँ ना बोलो भाई, याद है वो शख्स? नहीं याद है? मेंडलीव ने जो अपनी पहली टेबल दिया था वो ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पे तो दिया था। अरे बोलो कुछ, या तुमको याद ही नहीं है? नहीं याद है ना? वो टेबल तुमने देखी भी नहीं होगी ना, मुझे समझ आ गया। मेंडलीव की जो टेबल थी उसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। वर्टिकल कॉलम ग्रुप बोलते थे और हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोलते थे। हर वर्टिकल कॉलम दो पार्ट ए और बी में डिवाइड था। याद नहीं याद है? उसने पहली बार एलिमेंट को उसने कैसे लगाया? पहली बार एलिमेंट को उसने क्लासीफाई किस बेस पे किया? इन ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के बेस पे। याद है नहीं याद है? नहीं याद है तुमको? नहीं याद है ना? चलो तुमको मैं याद दिलाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे आएगा, पीरियोडिक टेबल। तो फिर से तुम मिलोगे मेंडलीव से, ठीक है ना? तो हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेस पे इसीलिए मेटल को क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना? भाई क्लासिफिकेशन ही तो था। हम लोग अभी भी तो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं सब्सटेंस का, एलिमेंट का, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, है ना? तो इसीलिए मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बताया है और थोड़ा एसिड से बता दिया, ठीक है? चलो, तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई भाई केमिकली? 3 हो गई क्या? डायनोएडिक, नॉन मेटल। चलो, डायनोएडिक, नॉन मेटल। अच्छा, एक पॉइंट हमारा रह गया, मेटल में लिख लो। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये तो रह गया था ना। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसा कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? बोलो भाई। उसके बारे में भी आपने 10th क्लास सुना होगा, उसने भी थोड़ा परेशान किया था। कौन सा? कहीं से भी आया वो सही आया है। हाइड्रोजन, करेक्ट एकदम, है ना? हाइड्रोजन के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की भी होती है और एक्सेप्ट करने की भी होती है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो। एक्सेप्शन हाइड्रोजन लिखा है ना आप लोगों ने? लिख लेना है इसमें, एक्सेप्शन हाइड्रोजन, इट कैन लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इट कैन लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों काम करेगा, ठीक है? तो अब लिखो जरा नॉन मेटल्स। बताओ भाई, क्या बता रहा है नॉन मेटल के बारे में? नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल क्या है? जैसे मेटल में मैंने बोला, जैसे मैंने मेटल में बोला कि मेटल्स आर सॉलिड, तो नॉन मेटल क्या होंगे? लिक्विड। क्या नॉन मेटल सॉलिड नहीं होते क्या? क्या नॉन मेटल गैस नहीं होते क्या? होते हैं ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? ये सब हमारे क्या गैस ही तो है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, सब गैस ही तो है हमारे। तो नॉन मेटल एग्जिस्टिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल थ्री फॉर्म्स, ये हमारे सॉलिड के तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिखो पहला पॉइंट, नॉन मेटल एग्जिस्टिंग, non-metal existing solid, liquid and gas, all three forms. Non-metal existing solid, liquid and gas, all three forms. ठीक है? Existing solid, liquid and gas, all three forms. सेकेंड पॉइंट क्या बोला था हमने? हाँ, ठीक है, राइट। सेकेंड पॉइंट कहाँ है? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे क्या? बोलो। नॉन मेटल्स हैव low melting point with some exception, ठीक है ना? तो non metal have low boiling and melting point, यहाँ पर boiling इंक्लूड करना, ठीक है ना? non metal have low boiling and melting point with some exception. non metal have low boiling and melting point with some exception. बोलो भाई exception, correct? 'को exception को लिखना है। 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 'को exception को लि
वेरीफाइड, ठीक है ना। और कोई बताओ एक्सेप्शन। डायमंड एक्सेप्शन क्या लिखोगे, डायमंड। ठीक, तो हो गया ना। अब जाओ थर्ड पॉइंट लेके क्या है। थर्ड पॉइंट है मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। इसमें क्या लिखोगे आप, नॉन मेटल में, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, करेक्ट लिखो थर्ड पॉइंट। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ये एक्सेप्शन है, कौन सा लिख लो एक्सेप्शन, कार्बन फाइबर एक्सेप्शन लिख लो, कार्बन फाइबर, ठीक है। पॉइंट पॉइंट आउट लिख देगा, चलो चलो। मेटल हमारे नॉन प्लस सोलरस होते हैं क्या, नॉन मेटल लस्ट्रस होते हैं क्या, लस्ट्रस सोलरस नहीं होते ना, जरा इसको लिख लो। नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन सोलरस करें, नॉन लस्ट्रस करना, ठीक है ना। अच्छा बताओ ऐसा नॉन मेटल, इसमें मेटालिक मतलब इसमें शाइनिंग हो, कौन सा, डायमंड, डायमंड कुछ शाइन करता है क्या, सनलाइट में शाइन करेगा ना। सनलाइट अगर नॉर्मल लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद नेचुरली शाइन होता है, आयोडीन का करंट, ठीक है। इस इनको एक्सेप्शन आयोडीन, एक्सेप्शन इनको आयोडीन, ठीक है ना। आई ठीक, अब कौन सा है भाई, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, सॉरी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें क्या लिखोगे आप, लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, लो लो और की नो, उसमें लो उसमें नो, ठीक है, तो नो लिखो, नो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज नो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, नो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज it's that is electrical, that is electrical or thermal insulator, that is electrical and thermal, not all, that is electrical and thermal insulator, electrical and thermal insulator। कोई नॉन मेटल ऐसा बताओ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, ग्रेफाइट, करेक्ट लिखो, एक्सेप्शन ग्रेफाइट, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। हाँ नॉन मेटल हमारा इंस्टीट्यूट हो गया ना आपके, और एक्सेप्शन में ग्रेफाइट दिखाया, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, पता है क्या करना है, ठीक। और कौन सा पॉइंट दिखाया था, दिखाओ जरा, और दिखाया था नाइन्थ हमारा ना, मेटल और रिएक्शन विद ऑक्सीजन, देखो जरा इसमें, नॉन मेटल ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स on reaction with oxygen forms, non-metals on reaction with oxygen forms acidic oxide, non-metals on reaction with oxygen forms acidic oxide, forms acidic oxide, है ना। जैसे एग्जांपल बताया आपको, जिससे मैंने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मैंने कराया रिएक्शन, तो ये बनेगा हमारा NO2, क्या बनेगा आपका, NO2 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप 2 लगा दो, NO2 बन गया। अभी जो NO2 है हमारा, ये हमारा क्या है, इट इज एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कैसे प्रूव करें इसको, एसिडिक ऑक्साइड बताओ। तो ये NO2 को तुम क्या करो, NO2 को तुम
वाटर सी के साथ डिसॉल्व करो, क्या बनेगा आपका? HNO3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? है ना? बस थोड़ा इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस कर लेना, ठीक है ना? तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही हमारा HCl, हाइड्रोजन या कोई भी मेटल ले सकते हैं हम यहाँ पे, क्लोरीन को ऑक्सीजन रिएक्शन कराओ, ठीक है ना? अभी एक एग्जांपल के लिए बहुत है, बहुत सारा लिखना ना इसमें फिर आप। ठीक है, बैलेंस हुआ क्या ये अभी? नहीं बैलेंस हुआ ना? चलो ठीक है, विदाउट बैलेंस भी कोई दिक्कत है? और कौन सी प्रॉपर्टी लिखा है, कितनी हो गई अभी? केमिकल एक ही हुई क्या? ठीक। और इसमें जरा लिखो आप, नॉन मेटल ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन forms, non metals on reaction with oxygen, on reaction with oxygen forms volatile hydride, form volatile hydride, form volatile hydride, ठीक है? तो हो गया ना? एक पॉइंट और लिखो जरा, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन, हाँ, लास्ट वाला पॉइंट ना लिखो, नॉन मेटल्स डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन, यही वाला पूछ रहे हो ना? नॉन मेटल्स डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड, ऑन रिएक्शन विद एसिड, है ना? नॉन मेटल्स डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड। सभी के पॉइंट्स हो गए ना? किसी का छूटा हो तो बोलो, छूटा है क्या? लास्ट वाला समझ लिखा ना, नॉन मेटल डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड। इससे पहले वाला क्या था? सेकंड लास्ट देख लो, नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मैंने बोला क्या? ऑक्सीजन बोला क्या? नहीं नहीं, नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन फॉर्म वोलेटाइल हाइड्राइड, है ना? सेकंड लास्ट में नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दिखाया गया, तो फ्लो फ्लो में हो गया होगा, नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है ना? ऑक्सीजन का हाइड्रोजन लिखो। सेकंड लास्ट पॉइंट मैंने बोला है, जहां पर ऑक्सीजन लिख लिया वहां पर हाइड्रोजन कर दो, नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन फॉर्म वोलेटाइल हाइड्राइड, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स और लिख लेते हैं ना, तो वहां लिखना ज्यादा पड़ेगा ना? हाँ, थोड़ा सा ये बोरिंग पार्ट था, अब है तो है। मेटलॉइड्स आपके किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किए गए मेटल और नॉन मेटल से? तो देखिए, आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे ये आपके डिफरेंस डिफर करते हैं मेटल और नॉन मेटल से, क्लियर है ना? तो सर इतना लिखो आप कि दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स which have electrical conductivity, those elements which have electrical conductivity, elements those have electrical conductivity in between, elements those have electrical conductivity in between, in between metal and non-metal, in between metal and non-metal, called as, called as metalloids, called as metalloids,
कॉल्ड एज मेटलॉइड्स, ठीक है ना। मेटलॉइड्स के एग्जांपल लिखे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, एंटीमनी। एसबी पता है ना, एसबी। एसबी क्या होगा, एंटीमनी होगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, यस, आर्सेनिक, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, आपके 5 जो पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स है। क्लियर है ना। 5 है, मगर बिल के एकदम धूम मचा रखे हैं, ठीक है ना। ये 5 ही हैं। नेक्स्ट आएगा कंपाउंड, डाल बढ़ेगा कंपाउंड। अभी आप लोग पढ़ रहे हो सेकेंड। पहला आपने पढ़ा एलिमेंट, हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, और पढ़ते पढ़ते कहीं और निकल गए थे। एलिमेंट, एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड ना, वो पूरा खत्म करके हम आए यहाँ पे। तो सेकेंड हमारे पास क्या, कंपाउंड क्या है। व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड क्या होते हैं। जब when two or more than two element undergoes a chemical reaction, the resultant outcome is called as compound। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आप क्या करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा, कंपाउंड। देखो जरा, एक एलिमेंट था, एक एटम था। ध्यान सुना मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक एलिमेंट था, एक एटम था, एक, और एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है। दो एलिमेंट कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे क्या बनेंगे, कंपाउंड। क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। दो एटम कंबाइन करें क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, दोनों में बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है। बात समझ नहीं आई। दोनों में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है एकदम, ठीक है। तो लिखो, when two or more element, when two or more element combine in a certain ratio, when two or more element combine in a certain ratio, when two or more element combine in a certain ratio, combine in a certain ratio, compounds are formed, compounds are formed, compounds are formed। एक डेफिनेशन और लिखो, और करके डेफिनेशन और लिखो। इसमें के दो सब्सटेंसेस, या हाँ, दो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which can, which can divide, those substances which can divide chemically, which can divide chemically, which can divide chemically in more simple, in more simple, in more simple components, in more simple components called as, in more simple components called as compound, called as compound। और ये डिफिनेशन बहुत सटीक लगी हमको। जैसे H2O क्या है, H2O, H2O इज अ कंपाउंड। H2O हमारा क्या है, H2O कंपाउंड है। क्लियर। क्या H2O मॉलिक्यूल है, बिल्कुल H2O मॉलिक्यूल है। H2O हमारा मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें, सिंगल एंटिटी की बात करें, तो हमारा कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल है। लेकिन सब्सटेंस के फॉर्म में बात करें तो क्या हमारा ये बाय नेचर, ये बाय नेचर क्या है, कंपाउंड है। लेकिन अगर उसका मैं एक उठा लूं ऐसे करके, तो मॉलिक्यूल है। अंतर समझ में आया कुछ, मुझे अंतर समझ में आया। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है।
अगर हम सिंगल एंटिटी उठा के बात करें, सिंगल एंटिटी उठा के बात करें, सिंगल एक यूनिट उठा के बात करें, तो H2O मॉलिक्यूल हो जाएगा। H2O का एक मॉलिक्यूल मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन होनी चाहिए और 16 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। इतना तुमने उठा लिया हाथ में, H2O मॉलिक्यूल क्या है? H2O मॉलिक्यूल। और ये तुमको दिखाया मैंने कंपाउंड है। क्या है? ये कंपाउंड है। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इट कैन डिवाइड इनटू हाइड्रोजन एंड, अरे है ना भाई, इसके अंदर मैं 2 पेंसिल गाड़ दूंगा, एक ऐसे और एक ऐसे। यही प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, सर की बोतल है ये, कर भी देंगे हम। ये इधर एक पेंसिल गार्ड है, इधर पेंसिल गार्ड है, दोनों साइड से क्या कर लिया? शार्प कर लिया। तो ग्रेफाइट है अंदर, वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा ना, अभी बताया हमने। तो इधर गाड़ा है ना, और इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, इससे डाल दो, बेस डाल दो। बिकॉज न्यूट्रल वाटर इज न्यूट्रल वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जो न्यूट्रल वाटर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, न्यूट्रल वाटर होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ हमको मिलाना पड़ेगा। एसिड बेस या सॉल्ट मिला हुआ ना, मिला दिया, एक पेंसिल इधर गाड़ी एक इधर गाड़ी, दोनों को वायर से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद वो प्लग निकाला, डाल दिया अंदर, स्विच ऑफ। तुरंत हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस क्या होगी? अपने आप इलेबरेट होगी, ये अपने आप क्या होगी आपकी? इवॉल्व होगी आपकी, है ना। हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ये निकलेगी, ये प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो H2O को तुमने क्या किया? H2O को तुमने क्या किया? ब्रेक डाउन किया ना। किसे ब्रेक डाउन किया? H2 और O2 में। अरे किया ना, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है? देखो, थोड़ा मन की आंखों से देखो, ठीक है ना। H2 और O2 आपकी इवॉल्व होगी, ठीक है, तो ये कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। और अगर H2 होती, H2 क्या होती? H2 होती तो वो कंपाउंड ना होती। आप फिर वही बात कर रहे हो, H2O अगर है कंपाउंड, H2 क्यों नहीं है? और भाई H2 मॉलिक्यूल है, H2 को ब्रेक करोगे H और H मिलेगा, एटम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एटम्स मिलेंगे, जिसको कंपाउंड, जिसको ब्रेक करने पर दो अलग अलग चीजें मिल जाए। जैसे CaCO3 क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करो क्या मिलेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, पता है ना चूना? कौन सा चूना? एक वो, एक सुनो, एक वो वाला चूना होता है, कौन सा? जिसको पान के साथ लगा खाते हैं, वो चूना नहीं बेटा। वो क्या होता है वो? उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो, वो चूना CaO है। क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम है वो। और उस चूने में लगाया पानी तो बन गया चूना पानी। अरे समझो भाई, उसका फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है? आपका वो स्लैक लाइम है, स्लैक लाइम CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, वो स्लैक लाइम है। और CaCO3 क्या, जिस चौक से लिखते हैं वो क्या है? CaCO3 है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। समझो सेग्रीगेशन, समझो हर एक चीज में ना। बाबू से कभी ऐसे बैठे हो पान खाने मस्ती में, बेटा इस चीज फॉर्मूला क्या है? क्या है? क्या फॉर्मूला इसका? तुमने बताया CaCO3, अब निकाला फोन में, क्या फॉर्मूला क्या है? गलत बता रहे हो तुम, तो सब कुछ मालूम रह सके। ऐसे पूछ देते ना पापा लोग कभी, ऐसे बैठे शांति में, चलो थोड़ा सा मजे लिए जाए इसके, है ना। ठीक, तो वो क्या है? CaO, क्विक लाइम। और चूना पानी मिक्स होगा, चूना पानी तो क्या होगा? स्लैक लाइम, CH का होल ट्वाइस, है ना। और एक आपका होता है सी, जो चौक वाला, CaCO3, संगमरमर, मार्बल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई क्या होता है? CaCO3 करेक्ट, बट वो जो CaCO3 है हमारा, वो CaCO3 की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और चौक है CaCO3 एमॉर्फस फॉर्म। कैसी फॉर्म है? एमॉर्फस फॉर्म। सब पता होना चाहिए आपको, है कि नहीं? इतना पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, है ना। सब चुना चुना हो गया ना। H2 हमारा पास क्या है? इसको क्या करोगे आप? इसको आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 2H2 प्लस O2, ठीक है ना।
चलो सुनो फिर से आते हैं। CaCO3 ब्रेक डाउन हुआ, क्या होगा आपका? हीट करो, क्या मिलेगा? CaO मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको? CO2 मिलेगा। CaO प्लस CO2, ठीक है ना? ये है लाइम स्टोन। क्या है हमारा ये? लाइम स्टोन है। इसी को गर्म करने पर क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और CO2। ठीक, ये लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन अलग बात होती है बच्चा, और जो चौक आती है वो अलग बात होती है, ठीक है ना? प्योर फॉर्म ऑफ लाइम है हमारा ये। ठीक, चलो भाई, कंपाउंड्स के टाइप कौन कौन से हैं? एलोनिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और करेक्ट, और एलोनिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिखो आप। टाइप्स ऑफ कंपाउंड मैं छोड़ रहा हूँ, है ना? टाइम हुआ क्या? हाँ लिखो, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एलोनिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है? बस दोनों टाइप लिख लो। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, आज एक तरह से मैंने तुम्हारा रिवीजन करवाया, ऐसा है ना? क्लास 10th का रिवीजन ही तो करवाया मैंने आज। एक चैप्टर था तुम्हारा क्लास 10th में, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना? तो रिवीजन ही तो हुआ है उसका। और एक्स्ट्रा पढ़ाया, और जो पढ़ाया तुमको आता ही नहीं था पहले से, मेटली, ठीक है? तो जो पढ़ाया है अभी उसको अच्छे से आप लोग पूरा पढ़ के कल आना। और जो होमवर्क दिया है मैंने क्लास 6 वाला, मेट सॉलिड लिक्विड गैस है ना, उसको डिफरेंशिएट कर कम से कम 5, मिनिमम 5 डिफरेंस को लिख के लाना। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ओके, थैंक यू।
You will have unit tests, terminal or first term and exam. Then maybe the second term, one more unit test and final examination. Okay, so for all those exams, your preparation for exam will be based on this things. Okay, now few tips as I have lived experience. Nowadays, what is happening is what my observation is students are becoming more uh, say exam oriented, and these days there is a trend. What I have seen is in many other colleges, a list of questions, so-called question bank, is given in the college for students to study or to prepare. And question paper is based on that question bank. Meaning, it is as good as students already know the question paper when question bank is shared with them. Because all the questions will come from question bank only. Now, what happens is, personally, I have no problem if question bank is shared and then teachers set the paper. But what happens is, when this is in 11th standard, students carry the same mentality or psychology in 12th standard when you are going to appear for your boards. Now, in board exam, do you know how is the method of setting question papers in board exam? Anybody is aware? I'll just tell you for your information. Throughout the state, Maharashtra state, because within Maharashtra state, there are many colleges who follow this state board syllabus. Correct? So experts or senior teachers are invited by board to set the question paper. Okay. What is provided to the paper setter or the teacher? Syllabus, textbook, paper pattern, and weightage. That is topic 1, say weightage is 3 marks, topic 2 weightage is 6 marks, whatever it is. And now paper setter is just expected to follow pattern and weightage and has complete freedom to set the paper. Okay, and this is done confidentially. So, say, paper setter 1, 2, 3, 4. These 4 people belong to 4 different places in Maharashtra. They are doing paper setting individually. They don't know even each other's name. That is, the first paper setter is not aware that the person sitting next to him is also a paper setter. Okay, so all those paper setters will set the papers confidentially, and then finally, by lottery system, question paper is decided. So if there are 10 question papers set by 10 different paper setters, then out of those 10, by lottery system, one paper is selected as final question, which means that if you develop or if you have that psychology that I will prepare from question bank, you can now just imagine how this that thing is going. Are you getting my point? So please don't develop that psychology that I will prepare questions from question bank. In addition to question bank, please do thorough reading or study of your textbook. Then only you will be confident.
Now this year what happened is biology question paper of March 2026 was mostly based on general biology. There were no very INT questions in the question paper. Even I was quite surprised to see the question paper because it was bit kind of paper. And then it was a tough time for many students because some students had prepared particular questions and did not prepare the other things. So it's a big risk. Don't take that risk. And another thing is, let me try to tell you that syllabus of boards and entrance is same. Syllabus is not different. So whatever you are going to prepare for your boards, definitely it is going to be useful for your entrance exam. So again, over here, don't develop that mindset that boards has different portions. Pattern is different, but portion is not different. It's the same. Okay, so when you are well prepared for your board exam, automatically almost 60-70% preparation for your entrance is automatically done. Then what remains is extra work which remains is just to follow the pattern of entrance exam, and there are MCQ type of questions with various difficulty levels. Or over there also there are different academic difficulties. Okay, so concepts don't differ. Concepts are same. Whether you study biology in college or whether you are preparing for entrance. There's no difference. Because a lot of times that's where it's not very clear with basic things. And then they start ignoring board. Again, please remember that to qualify for your further admission, certain score in board is mandatory. If you fail to score those many marks, you will not get admission for your further course. And I have seen a lot of time, then students running for class improvement, then they give second attempt, third attempt, and all that. In that, lot of time gets wasted. So, please write in 11th standard in the beginning that these things are very clear in your mind, then you can start preparing for it. Okay? So now, what we can do is, I will dictate few things today, what all concepts you have done yesterday, and then I have to still discuss one feature of living organism, that's the last thing, and then we move on to the next one. Okay, so now please write down topic, the living world. Yeah, am I audible? Are you able to hear me? Can I write down?
On the planet Earth, on the planet Earth, there is great variety or diversity on planet Earth. There is great variety or diversity among living organisms, among living organisms with respect to, with respect to habitat, with respect to habitat, comma, morphology, morphology with respect to habitat, comma, morphology, anatomy, 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 physiology, physiology, and behavior, and behavior. Continue. This diversity, this diversity is necessary. This diversity is necessary to maintain ecological balance, to maintain ecological balance. Okay, so this is a brief concept of what is diversity and what is its importance. Now, next slide. Features of living organisms. Features of living organisms. The first point or the first feature is growth. Growth. Growth is permanent increase, permanent increase in size, permanent in size, body weight, body weight, comma, dry weight of an organism, dry weight of an organism. It's like growth can also be defined as growth can also be defined as permanent change, permanent change in organism, in organism when anabolism exceeds catabolism. Anabolism exceeds catabolism. Okay, now before I give you 2 minutes, read these and see whether you have understood what we have written. Now that last thing you have noted just now, I explained what is the meaning of it. Yesterday we have talked about anabolism, catabolism under metabolism. Anabolism is
a constructive phase where molecules are constructed or new compounds are synthesized, right? And what happens in catabolism? It is a breakdown of complex molecules to form simple ones. Now, when molecules are broken down in catabolism, the molecules are being utilized. Okay? Whenever cell or organism requires such compounds, then the breakdown takes place and those compounds are used. Used means the existence of the compound is gone. Correct? Now, when would you expect weight to increase? When food accumulates in the body, right? So for food accumulation, food must be prepared and then it has to accumulate or it needs to be stored. Which means that if there is a rate of anabolism higher than catabolism, then when synthesis of new compounds takes place at a rapid rate, then breakdown, then food will stay. Otherwise, what will happen is food is prepared or food is eaten, immediately all the food is utilized. Nothing is left behind as stock. Okay? So then anabolism is more than catabolism, then cell will grow. Because to grow, there has to be stock of the food in the body or in the cell. Okay, so that's why we can also put growth in that sentence. Anabolism exceeds catabolism. That means anabolism is more than catabolism, then there is growth. Okay, so why I have given you all these different explanations? Because when you select an appropriate option or a question like all options are correct, in that case, you must know various ways defined. Okay, so that's why all these different say ways of definition of the role are given to you. Okay, continue writing. In these cellular organisms, growth occurs, growth occurs as increase in the cell size. Growth occurs as increase in the cell size and when there is cell division, when there is cell division, it is termed as reproduction. It is termed as reproduction. Okay, so now again here, the sentence that you have written just now, understand. You all are familiar with the name amoeba, unicellular organism. Now amoeba will grow, means
the size will become bigger and bigger. Okay, this is one type of growth. But when we are going to talk about growth in multicellular organisms, cell division is also growth. Because growth cannot happen without cell division for large animals and plants. Because without cell division, new cells will not be added and there will be no increase in size and weight without cell division. Understand? But when we apply this concept of cell division for organisms like amoeba, so one amoeba will divide into two, correct? But amoeba itself is unicellular. So now this cell division we will call reproduction. Are you understanding this? So here there is cell division, but result of the cell division is a different process, which is reproduction. And when cell division takes place in multicellular plants or animals, that leads to growth. This is how with different type of organism, we will be using this term growth or reproduction. Understood? Next slide. In multicellular organisms, growth occurs by cell division. In multicellular organisms, growth occurs by cell division. Next one. In plants, growth is continuous. In plants, growth is continuous. Whereas in animals, growth occurs in initial period, and later cell division occurs only to replace dead cells. Okay, so now again understand the graph. When plant grows, throughout the life of the plant, growth takes place. Okay, so that's why I have given you the statement that growth is continuous in plants. Whereas in animals, growth has to be symmetrical. Now, why symmetrical? Let's take our example. Just check your right hand and left hand. All of you. Length is same. So when bilateral growth takes place on the right side and the left side of the body, the rate of the growth is same. Otherwise, what may happen is your one arm is longer than the other, something like that may happen. Or if your facial growth here also, right side, left side, it does not grow properly, then your face will be disproportionate. Last year, when you were in 10th, have you done or in 9th standard malfunctioning of pituitary gland? Have you come across word acromegaly? Acromegaly is a disease, a hormonal disease in living beings, where face becomes disproportionate. It is an adult thing. So till adult, growth in that individual is normal. But after that, because of irregular growth or uneven growth of the face, then right side or left side, any one side of the face grows more than the other.
and the whole face appears to be in proportion. And that hormonal disorder is called acromegaly. So next year in 12th standard, when you are going to study hormonal coordination, there are very different glands in our body and some account associated with their functioning. You are going to come across this term acromegaly. So this happens because of malfunctioning of pituitary gland in our body. So in animals, what is important? Parallel growth, that is equal growth on both sides of the body is necessary. But that is not the condition in plants, because in plants, some branches can be longer than the others. That is fine. So in plants, there is no condition or there is no compulsion that growth should be even. But in animals, this condition does exist. And in animals, what happens is after certain period, that is after reaching adulthood, growth still takes place. There is cell division, but the rate of the cell division will be slow. And another thing is, body has already grown now, fully grown. Then why does cell division take place even if body is fully grown? There are cells in the body which are getting older. After old age, those cells are going to die and their replacement is must. Okay. So to replace those cells, cell division has to be. Okay. So this is how growth is slightly different in plants than in animals. Understood? All of you? Now, next feature. I'm sorry, next line you write out, next point. In non-living things, growth refers to addition of material or matter. Addition of material or matter which takes place externally, Continue. On the other hand, growth in living organisms. On the other hand, growth in living organisms is from inside. It's from inside. Because some understand here, what we have in the background is now. Externally, matter gets added. Like I given you example yesterday that I have 1 bucket full of soil. I make a heap of that soil and add 1 more bucket full of soil. So externally, I am adding soil. That is externally, matter is added and it is growing, right? So this is external addition of the matter and growth takes place. Do we get matter externally to grow? No. Then how does growth take place in living organisms? Inside cells that we divide and there is growth. So that growth is within or it is from inside. So that's the difference between growth in living organisms and non-living. So all of you have understood this first point
quite well what is growth, different ways to define or to explain the concept, and some comparative account between growth in living and non-living. Okay, but we cannot say that the growth becomes the unique feature of living organisms because even this can be seen in non-living person. Let it be addition of matter, but growth takes place. Okay. Now, second point or the second feature, metabolism. Metabolism. Yeah. It is the process. It is the process that includes. It is the process that includes all chemical reactions that occur, all chemical reactions that occur in organisms. The process, we will continue. The process is divided into, the process is divided into two parts. The process is divided into parts, namely anabolism, and catabolism, and catabolism. Next slide. Anabolism refers to synthesis of anabolism refers to synthesis of new compounds. Synthesis of new compounds. Whereas catabolism includes breakdown of complex compounds. Catabolism includes breakdown of complex compounds. Next slide. Metabolism is one unique feature. Metabolism is one unique feature of living beings. Is one unique feature of living beings. Our next feature we have discussed this yesterday. Irritability. Or consciousness. CONSCIOU. SNSS. Consciousness.
Right up. This is another. This is another unique feature. Another unique feature of living organisms. Another unique feature of unique unique feature of living organisms. Continue to write. Living organisms. Living organisms respond. Living organisms respond to stimulus. Living organisms respond to stimulus differently. Differently. Example. Example. Flowers. Flowers. Open. Open. At the time of sunrise. Open at the time of sunrise. And close. Close. At the time of sunset. Close at the time of sunset. Okay, don't write anything. But this is a very common thing that you can try to observe it. So suppose in your garden, if there are flower buds and now they are about to open, you will usually find that during morning time, the bud opens. So opening of the bud is controlled by light intensity because as sun rises, light intensity goes on increasing. Okay, and then in the evening when it's the time for the sun to set, light intensity reduces. So with that the reduction in the light intensity, the opened flower starts closing. There are certain leaves also which exhibit this kind of behavior. That is, with sunrise, leaflets open, and at the time of sunset, they droop down or they close. So here, which is the controlling factor? Sunlight. Maybe when you were in school, you have studied that you put a potted plant near the window, and after some days, you will realize that they bends towards the direction of the sunlight. So here, growth of the stem is controlled by sunlight, its direction. So what is happening is, here in these two examples, which is the stimulus, sunlight is the stimulus. Like that, water, temperature, certain chemicals, they can also act as stimuli. And in every situation, the response given by the individual will be different. So that is irritability or that's consciousness. And this property is not exhibited by non-living objects. Got it? Now the last property, reproduction. Right. Reproduction. Reproduction. The feature of organisms, reproduction.
is a picture of organisms where where parents give rise to parents give rise to next generation next generation of same type of same type. Now on the next slide. Okay, now before we write, or now you can take the running notes. Okay, can you tell me which are the basic types of reproduction? Correct. Two types. So you can note down as two types of reproduction, asexual and sexual. And now when asexual reproduction takes place, now there are many ways by which asexual reproduction will occur, usually in lower organisms. Lower organisms, whether they are plants or animals. So if you see organisms like mushrooms or other fungal members, they will produce spores for reproduction. If you remember, maybe when you were in school, have you ever tried to grow that bread mold on a slice of bread, which is rhizophus or mucor? So it has got a lot of black colored spores. So those spores are always produced in large numbers, and whenever those spores are carried along with wind, wherever they will fall, they find if they find conditions suitable, they will grow another. Okay, so asexual reproduction may occur by spore formation. Otherwise, there is another method of asexual reproduction is fragmentation. Now, what is a fragment? Fragment is a piece. So for fragmentation, the basic requirement is organism has to be like a thread, so that the thread will break into pieces. So can you give me any example of a thread-like organism? Yes? No. Spirogyra, correct. Spirogyra is a thread-like organism or a filament. Thread-like would be very layman's language. Last two girls, you're not interested, you can pack your bags and go out. I have already told that I will not tolerate any nonsense from us. Here you have come to study. There's no fun going around. If you have to sit quietly and listen to what I'm saying. If you have any queries, you are free to ask your questions. And portion is vast. Things are tough. They are bit more tough each day. So if you don't have patience, it will be very difficult for you to move on.
I'm just trying to explain the theoretical part. I have not moved on to any questions yet. So if these things are not understood by you, you will not be able to answer the questions. And then the whole purpose of getting admission here is a waste. From next class, you will not sit together. Understood? So fragmentation means any lower organism which is having a filament-like structure or a thread-like structure simply breaks into pieces. Okay, so every piece is a fragment. Every fragment will grow into new organisms. So if one spirovara filament breaks into 5 pieces, then all those 5 pieces are capable of forming 5 new spirovara organisms. That's fragmentation, which is a very rapid or fast process. Okay, so one method is spore formation, other is fragmentation. Then there are some organisms where you must have come across this word budding. Now budding in hydra, but hydra is multicellular. Budding in organism like yeast, which is used in bakery industry for fermentation purpose. This is also a method where asexual reproduction takes place. So what's the purpose of asexual reproduction? Quick reproduction. Usually what happens is when population is declining and organism just wants to increase the number quickly, then adopts asexual method. Because normally asexual methods are rapid ones and they may even occur even if things or conditions are unsuitable or not stable. Okay, so these are some of the methods, and one more is you may even add this budding and regeneration. This is another method under asexual reproduction. So how many methods we have discussed? Spore formation, fragmentation, budding, and regeneration. Now, in regeneration, I'll tell you things. One is, have you ever come across this kind of encounter at home that you see a house lizard, you try to kill it, but it escapes by cutting its tail. It's an escape mechanism. But have you ever noticed that it's very difficult to keep that track of tailless lizard for next few months? But after some weeks, the tail grows again. So that lizard does not remain tailless till the end of its life. No, tail grows again. So this is one kind of regeneration. Organ regenerates. Okay. This kind of organ regeneration may be also seen in starfish. Starfish has 5 arms, correct? They are from phylum Echinodermata. In 9th standard, you have done animal classification, correct? So many members from Echinodermata often use their arms because those arms are 5 or in multiples of 5. 5, 10, 15, depends. And with the fight with their enemies, often they lose their arms, break their arms. But then what happens to the broken arm? It develops again after some time. Now that's regeneration.
of a different kind. Okay. Now, here, when we are talking about asexual reproduction, this regeneration is something little different. Let's take organism like planaria. Planaria is a flat worm, a tiny worm. Looks something like this. Now this planaria, if it breaks into pieces, this is fragmentation. With our body, if our body gets cut into pieces or 3 pieces, individual is going to die, right? Planaria doesn't die. What happens is the upper portion will develop the other 2 parts. The middle portion will develop the other 2 missing parts. The lower part will again develop the upper 2 parts. So practically what has happened? 3 pieces have given rise to 3 new organisms. Got it? So is organism dead? No. Rather, it has formed 3 new organisms. That's the regeneration. So this is a kind of reproduction. Okay, so this regeneration and regeneration of tail or arm in other 2 examples are different. Here you get the whole organism formed after degeneration. So we term it as reproduction. This is another rapid method. Now in kingdom Animalia lesson, you are going to learn about flatworms or phylum Platypus, and this is one of the adaptations of these animals to stay inside the host body, because most of the members that degenerate by this way are endoparasites, meaning they live inside the body of other animals. Now what happens is that question is on. Host wants to drive out planaria. Planaria wants to stay inside the body of the host, because planaria very well knows if it is driven out of the host body, it is going to die. Okay, it can't survive without host. So it wants to stay in the host body. And what is the problem with the host? Host doesn't want planaria because planaria is giving lot of trouble to the host. So host wants to get rid of it. Planaria wants to stay. So what planaria does, cuts itself into 3 parts. Very soon, instead of 1, now there are 3 planaria. Like this, now you just imagine when many more such organisms are just multiplying in the host body, the number will be large. Okay, so this is the strategy of the organism. Stay in the host body and survive. Okay, so these are different ways by which asexual reproduction takes place, which is a very quick method of reproduction. And now you note down sexual reproduction, just 1 or 2 lines about it, which is another method. Sexual reproduction involves Sexual reproduction involves 2 parents. Sexual reproduction involves 2 parents producing gametes. Producing gametes. Gametes unite. Gametes unite to produce zygote. Gametes unite to produce zygote. Said by G.O.T. Okay, so this is about sexual reproduction.
Are you all tired? Okay, so next time what we will do is read this part at home. In the next session, in the beginning itself, I'll give you one or two very simple questions to attempt. They will be in CQ. Just want to test how much you have understood. And then we will move on to the next concept, that is classification and nomenclature. Okay, and very soon, institute will give you study material. So you have to carry that book with you for every bio session, because I'm going to ask you to mark certain things over there which are important ones, as well as I'm going to give you some time to read here and then solve questions based on it. Okay, so that's it for today. See you next time in your next session. All topics of schools going on. Let me know, because see, every year, bunch of students are going to do it. So if you find the speed to be too slow, then I will feel the speed. Or, if this is okay, fine, but of course, after some time, I have to introduce this because it's very difficult to connect the whole time. And, keep giving your feedback so that I'll also be in a position for whether it was proposing, was coping up, and how are things, how do you find the things? So keep giving your feedback. No, because diagnosis is quite different. In the sense, very, very wrong. Because their body structure is different as even they don't have digestive system. Because they don't have the digestive manner, which absorb that. So their body structure is